Just because your last point was a very important point about the vaccination. Everybody needs to be vaccinated. But there are many health workers you have seen who have, had two vaccines and yet succumbing to COVID. Uh, what exactly have you got any data about how many frontline workers who have been given two doses, how they are succumbing? What is the reason? Because this vaccination, you said once you take it, you'll have some protection against at least death. But here we are not getting that, and we've seen in many cases that after taking two vaccines, this is happening. So your last point, how does it reassure the public? Uh, while detailed guidance will be given by sir, but let me just highlight to you. जैसे इससे पहले भी इस मंच पर हमने बताया था कि अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ री इन्फेक्शन या परसेंट ऑफ इन्फेक्शन इज मच 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 लेसर. अगर आप देखें, हम वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बात करते हैं, अगर वो 81% है, 78% है, तो इसका मतलब जो अभी तक का एविडेंस भी कहता है कि कुछ परसेंटेज चांसेस ऐसे हैं जहां पर कि आप वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं. बट जो हमारे देश का डेटा है कि इवन मच मच लेसर परसेंटेज ऑफ दैट हैज़ एक्चुअली बीन री इन्फेक्टेड, जो इस मंच पर इससे पहले दर्शाया गया है. दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने हमेशा बताई है वह यह बताया कि एक और एडवांटेज वैक्सीन लेने का होगा कि अगर आप इन्फेक्ट हो भी जाएं किसी कारणवश, तब आपके इन्फेक्शन की सीवियरिटी नहीं रहती है, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है. तो ये आपको इससे पहले भी कई स्टडीज़ मीडिया में ही इसके बारे में आ चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि कितने लोग किस हॉस्पिटल में री इन्फेक्ट हुए, उसमें से किसी को भी सीवियर केस में कन्वर्ट नहीं हुए या 1% कन्वर्ट हुए. तो वह डेटा है. बट आई वुड ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ मोर साइंटिफिक, आई वुड रिक्वेस्ट सर टू काइंडली गाइड अस फर्दर ऑन दैट. इस मंच से डॉक्टर भार्गव ने कुछ दिन पहले शेयर किया था. Maybe we can take it up next time with more data, specific data, because the ICMR had ascertained the incidence of breakthrough infections. It was low, but I don't want to speak of any particular number today from recall, but we will look at this. But we also want to assure you that a very close watch is being maintained systematically in this regard by the Indian Council of Medical Research, where the information regard to testing comes, and one field in testing is, did you receive the vaccine? So there is a way to know it, and updated insights on this can be provided. But I like you to remember what Dr. Bhargav had said a few weeks ago, the small incidents that occur. But you're right, in a dynamic situation, we should watch it very carefully. And as Love said, that the vaccines are protective to an extent. The efficacy rates are of a certain level, and therefore in an overwhelming situation, that risk remains, and that's why we continue to take additional precautions as well to make sure that we are protected. Thank you. Number 152.